Welcome to agpgstudy लखनऊ यूनिवर्सिटी के B.sc एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर की प्रैक्टिकल फाइल डेयरी साइंस। सो लेट स्टार्ट। एक्सपेरिमेंट फर्स्ट। पर्पस। इसका पर्पस ये है कि जो हम सैंपल लेंगे वो डायरेक्टली हमें काउ टीट से लेना है, को कलेक्ट करके फिर उसकी कल्चरिंग करनी है। एंड सैंपल्स आर टेकन फ्रॉम काउज and with high somatic cell count, clinical and subclinical mammary infections, fresh cows as early as 7th milking postpartum. Second, responsibility trained casual or full-time staff and students. Materials. So these materials are alcohol swabs, sterile tubes, permanent marker, California, mastitis, CMT pedal and solution, clean nitrite or latex gloves. So procedure. So first procedure is practice aesthetic techniques. Second, don gloves. Third, prepare करना है for milking as per SOP DC 605. And preparing cow for milking, perform a California mastitis test as per SOP DC 617. Identify any quarter that is positive and record it in the treatment book. And after that, attach the tail or overhead bar so it doesn't interfere and contaminate your sampling. Well, California mastitis test is a simple, quick, and inexpensive test that measures the inflammation of cows in the mammary gland. After that, next point is इसमें हमें अडर को एक क्लीन पेपर टॉवल से वाइप करना है टू रिमूव एनी bedding and manure to avoid contaminating your samples. Remove your gloves. Identify each tube with date, quarter of CMT, and first point is place the sample tubes and box of alcohol swabs on paper towel on the stock floor next to the cow. Clean gloves. Any quarter testing positive on CMT should be sample last to avoid contamination of sample. And then second point, अल्कोहल वाइप का यूज़ करते हुए हमें CMT को डिसइंफेक्ट करना है। CMT को डिसइंफेक्ट करना चाहिए अल्कोहल वाइप से एंड देन रिमूव द कैप फ्रॉम द ट्यूब एंड होल्ड इट फेसिंग डाउन without the inside the cap touching your gloves. रखना है. In the same hand you will be holding the sample tube. Hold the tube at 45-degree angle and fill at least 3/4. Place the cap back on. तो 45 डिग्री एंगल पे इसको रखना है और इसको 3/4 कम से कम इसको फिल करना है. कंटिन्यू द प्रोसेस विद अ न्यू अल्कोहल वाइप फॉर ईच टीथ. सो ऐसे ही वंस ऑल योर सैंपल हैव बीन टेकन द काउ कैन नाउ बी मिल्क्ड. Refer to corresponding SOPs. So these are DC, milking procedure general, fresh cow, pale cow in tie stall. So these are, and after that culture the samples as per SOP DC 616 culturing note. Milk culturing note. Samples can't be immediately cultured. Store in the refrigerator for up to 24 hours. Returns all materials to design areas in the pharmacy. Experiment second. Milk testing. Clot on boiling test. Objectives: to determine the stability of milk for heat processing. Relevant informations. Relevant information में अगर मिल्क को हम रूम टेम्परेचर पर रख देंगे तो उसमें एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी. इट्स कॉल्ड डेवलप एसिडिटी. अगर एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी तो देन more than 0.2% there is a coagulation due to heat treatment, which is the result of dissociation of calcium caseinate salt. Hence it is essential to know the heat stability of incoming raw. For
Any acid smell or precipitated particles on the sides of the test tube. On the test tube, the sample showing precipitated particles are recorded as positive COP test. Well, COP test is a clot on boiling test. So procedure is first 5 ml 5 ml milk लेना है टेस्ट ट्यूब में. Second point, put this on boiling water which the milk is determined that. So in this test the milk is determined which is fit for pasteurization or not, and 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 also is suitable for consumption, and also it is suitable for consumption or not. So in this procedure, first we take 5 ml of milk in test tube, then boiling. if if the milk clot during heating or coagulate, so ये milk sample showing precipitated particles are recorded as positive COB test. Such milk is rejected on the platform. Know the heat stability or incoming raw milk for further processing. Precautions. Avoid direct heating of milk. Use hot water. Materials required: milk and milk container. Apparatus: test tube 20 ml capacity. Hot water bar. Test tube stand. Heating arrangement by electrical connection. Experiment 3. MBRT, methylene blue dye reduction test for assessing the raw milk quality. So the first point is methylene blue dye reduction test, commonly known as MBRT test. It is very quick method. Blue dye reduction test, commonly known as MBRT test. ये बहुत ही quick method है और and is easily access the microbiological quality of raw and pasteurized milk. इस मेथड का यूज़ हम रॉ और पास्चराइज्ड मिल्क को बीजर करने के लिए करते हैं, क्वालिटी को चेक करने के लिए करते हैं. सेकंड पॉइंट इज ये मेथिलीन ब्लू एक इंडिकेटर की तरह वर्क करता है दैट लॉस इज कलर अंडर द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इज थॉट टू बी रिड्यूस्ड. थर्ड पॉइंट, डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन इन द मिल्क इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ रिड्यूसिंग. मिल्क में जो भी ऑक्सीजन का जो डिप्लीशन होता है, मतलब जो कम होता है, इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ रिड्यूसिंग सब्सटेंस इन द मिल्क बाय इनहेंस्ड फॉर बैक्टीरियल मेटाबॉलिज्म. फोर्थ पॉइंट इज द dye reduction time refers to the microbial load in the milk and the total metabolic reactions of the microorganism. The next point is the sooner the discolorization more in जैसे ही कलर डिसअपेयर होगा उसका मिथिलीन का, तो वो शो करेगा जो बैक्टीरिया जैसे ही उसका डिस्कलरेशन होगा, जो भी हमने उसमें मिथिलीन ब्लू इंडिकेटर डाला है, तो वो शो करेगा द बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी ऑफ मिल्क अस्यूम टू बी. वो शो करेगा मिल्क की क्वालिटी बहुत पुअर है. दिस टेस्ट इज वाइडली used at the dairy reception dock, processing unit and milk chilling centers, where it is followed as acceptation rejection criteria for the raw and processed milk. Based on MBRT. MBRT may be utilized for grading of milk, which may be useful for the milk processor to take a decision on further processing of milk. As per BIS 1, as per this number. Procedure. So the test has to be done under sterile conditions. And second point is 10 ml milk sample लेंगे in a sterile MBRT test tube. Add 1 ml MBRT dye solution. Dye concentrate 0.005%. 10 ml हम milk sample लेंगे, फिर उसमें 1 ml MBRT dye solution डालेंगे. Then stopper the tubes will sterilize double stopper की help से उसको stop कर देंगे and generally invert the tubes at
about 4 or 5 times to ensure proper mixing of the methylene blue solution। फिर उसमें 1 ml MBRT डाई सॉल्यूशन को ऐड करके फिर उसके ट्यूब का जो स्टॉपर है उसको क्लोज करके उसको हम जेंटली इन्वर्ट करेंगे, जिसमें जो भी हमने सॉल्यूशन डाला है वो प्रॉपरली मिक्स हो जाए। 4 to 5 टाइम ऐसा करेंगे जिससे प्रॉपरली मिक्स हो जाए मेथिलीन ब्लू सॉल्यूशन। फिर उसको हम केयरफुली टेस्ट ट्यूब स्टैंड में रख देंगे एंड इन अ सेरोलॉजिकल वाटर बाथ मेंटेन एट 37 ±1 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर ये वाइटेस्ट अपीयरेंस में कलर इसका टर्न हो जाता है, डिस्कलरेशन कंसिडर्ड कंप्लीट व्हेन अ फेंट ब्लू रिंग अबाउट 5 mm persists at the top। Precautions: the presence of light fastens the reduction rate, hence the test tube under observation should be tightened properly। इसको प्रॉपरली टाइट करना है, क्योंकि जो प्रेजेंस ऑफ लाइट होती है वो रिडक्शन रेट को फास्ट कर देती है। यूज यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन ऑफ मेथिलीन ब्लू डाई इन ऑल टेस्ट सैंपल। यूनिफॉर्म जो भी हम जैसे 1 ml का हमने कंसंट्रेशन लिया है मेथिलीन ब्लू डाई सोल्यूशन का, तो 1 सब में ही डालेंगे। जो भी हम सैंपल टेस्ट करें, ये नहीं किसी में 1 डाल दिया 2 डाल दिया, तो यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन यूज़ करेंगे। एडिशन ऑफ मोर मेथिलीन ब्लू डाई विद रिजल्ट इन मोर रिडक्शन टाइम। Addition of more methylene increased incubation temperature reduce the reduction time, since the activity of some organisms increases with increased incubation temperature। अगर हम इंक्यूबेशन टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर रिड्यूस होगा, द रिड्यूस तो जो रिडक्शन टाइम होगा, सिंस द एक्टिविटी ऑफ सम ऑर्गेनिज्म इंक्रीज विद इंक्रीज, तो जो एक्टिविटी होती है सम ऑर्गेनिज्म की वो इंक्रीज होती है इंक्यूबेशन टेम्परेचर इंक्रीज होने से। Periodically invert the tube at irregular intervals during incubation time to improve the accuracy of the test result. Otherwise, microorganisms may not be evenly distributed in the milk sample, leading to wrong result interpretations। इंक्यूबेशन टाइम के समय हम जो ट्यूब होंगी उसको रेगुलर इंटरवल पे इन्वर्ट करेंगे, जैसे कि MBRT टेस्ट में ये होता है, अगर जो भी हमने जो प्रोसेस जो पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं उसके अकॉर्डिंग अगर उसका जो कलर है वो काफ़ी समय से डिसअपेयर नहीं हुआ, तो इसका मतलब जो मिल्क की क्वालिटी है वो अच्छी है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो जो भी हमने सैंपल किया है उसका कलर 5 घंटे बाद भी जो मेथिलीन ब्लू जो मेथिलीन है वो ब्लू कलर का होता है, तो ब्लू रहा उसका कलर, तो वो मिल्क अच्छा है। अकॉर्डिंग टू टाइम अगर उसका कलर चेंज नहीं हुआ, अगर उसका कलर डिसअपेयर नहीं हुआ, उसका मतलब वो मिल्क की क्वालिटी वेरी गुड है। अगर आफ्टर 1 to 2 आवर भी उसका कलर डिसअपेयर नहीं हुआ, देन उसकी क्वालिटी गुड है। अगर अगर उसका कलर 30 मिनट में ही चेंज होने लगता है, डिसअपेयर हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, दैट मीन्स द मिल्क क्वालिटी इज़ नॉट गुड, दिस मिल्क क्वालिटी इज़ पुअर। Phosphate taste. Pasteurization is an essential process in the production of milk, which is safe and free from pathogen। Pasteurization एक बहुत ही essential process है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क के लिए, जो कि एक सेफ और फ्री फ्रॉम पैथोजेंस है। Alkaline phosphate is an enzyme which is naturally present in the milk but is destroyed at temperature just mean near to the pasteurization temperature। Alkaline phosphate एक एंजाइम है जो कि मिल्क में नेचुरली मिलता है, बट इट डिस्ट्रॉयड एट बट एक टेम्परेचर पे डिस्ट्रॉय हो जाता है जस्ट मीन टू द पास्चराइज्ड टेम्परेचर। Alkaline phosphate test is used to indicate whether milk has been adequately pasteurized or whether it has been contaminated with raw milk after pasteurization। जो alkaline phosphate test होता है
वो हम यूज़ करते हैं ये इंडिकेट करने के लिए कि जो मिल्क है वो पाश्चराइज्ड है या फिर कंटामिनेटेड है। कंटामिनेटेड आफ्टर दिस टेस्ट This test is based on the principle that the alkaline phosphate enzyme in raw milk liberates para-nitrophenol from a disodium para-nitrophenol phosphate and forms a yellow colored complex at alkaline pH. This. The resulting para-nitrophenol is yellow with a maximum absorption at 405 nm. The intensity of yellow color produced is proportional to the activity of the enzyme. Test principle. P-nitrophenol phosphate. So this is the reaction plus P and then gives the para-nitrophenol. Yellow complex plus inorganic phosphate. Last point is alkaline phosphate induces the hydrolysis of p-nitrophenol phosphate in an alkaline solution and forms a yellow colored complex. The intensity measured at 405 nm is directly proportional to the concentration of ALP in her sample.